North Block, where Finance Minister Arun Jaitley is addressing a press conference on the cabinet briefing. Well, the Department of Financial Services had circulated two different proposals to the cabinet today, both with regard to the establishment of a credit guarantee fund. Now, the first credit guarantee fund is being established for the Mudra loans. Now, with each passing day, the banks have been further activating the loans under the Mudra scheme. Now, so far we were keeping track of the loans being sanctioned directly by all the banks. And now these are also being sanctioned through various refinance institutions. And the number of beneficiaries, I am informed, under both the categories has now reached a staggering figure of 173 lakhs, 1.73 crores. The precise figure is 173.20. As I said earlier, we were keeping track of all the direct beneficiaries, which also had reached about 1.2 crores. And therefore, because of this, and we are still in early January, and there is a significant headspace even now in the total budget that we had, or the total amount that we had as a part of this lending which the banks had planned. Both the public and the private banks have participated in this, and therefore I hope more and more people would continue to avail of this scheme till the 31st of March this year. That's right, sir. What happens to this scheme next year, you'll only know in the budget proposals this year. With regard to the details of the credit guarantee fund, the Secretary, Department of Financial Services is here. The Special Secretary are also here. They'll give you the specific details. The second is again a credit guarantee fund which has been set up to support the Stand Up India campaign. Now, the Stand Up India campaign is completely distinct from the Startup India. Now, both these suggestions were mooted by the Prime Minister in the Independence Day speech. And I will just now, after this, for the benefit of those from the Hindi channels, I'll also repeat this in Hindi. These were mooted by the Honorable Prime Minister in the Independence Day speech. The Startup India is really intended for new entrepreneurs, mainly in the technology sector, for which there is a official launch being planned on the 16th of this month. The Stand Up India is a proposal restricted to the scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs. Those who need to be given an extra push in order to become entrepreneurs. And every branch of every bank will fund at least two persons, one in the SC/ST category
and another woman entrepreneurs. Correct, sir. And the total amount to be sanctioned to them for setting up greenfield projects will range from 10 lakhs to rupees 1 crore. मैं हिंदी में इसको बोल देता हूं कि आज 2 क्रेडिट गारंटी फंड मंत्रिपरिषद ने तय किया, जिनकी प्रस्तावना की गई है। पहला सरकार की मुद्रा योजना के संबंध में है, जो पिछले वर्ष हम लोगों ने लॉन्च की थी, जिसके तहत 3 प्रकार के ऋण हैं, 50,000 तक, 5 लाख तक और 10 लाख तक। 3 श्रेणियों के ऋण हैं जो लोगों को मिल सकते हैं, और ये केवल जिनका कोई व्यवसाय करने का कोई प्रस्तावना है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग, उसके आधार पर बैंक देते हैं। ये वो अनफंडेड सेक्शन था जिसको पहले 25, 30, 35% पे देनदार से ब्याज पे पैसा मिलता था। अब उनको सीमित मात्रा का ब्याज देना पड़ता है, जो बैंक रेट है। पहले हम इसकी जो गिनती कर रहे थे कि बैंक डायरेक्ट लेंडिंग जो कर रहा है, जो लगभग 1 करोड़ 20 लाख एंटरप्रेन्योर्स तक आई थी, और इस वर्ष 1,22,000 करोड़ रुपया इन छोटे अनफंडेड एंटरप्रेन्योर्स को बैंक व्यवस्था के माध्यम से देने की प्रस्तावना थी, और उसमें से लगभग 72,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। अब इसके साथ साथ जो बैंक रीफाइनेंस कर रहे हैं और रीफाइनेंसिंग एजेंसीज भी जो दे रही हैं, उसको मिलाकर 1,73,000 1 करोड़ 73 लाख एंटरप्रेन्योर्स, 173.20 lakhs एंटरप्रेन्योर्स को यह दिया जा सकता है। इसके संबंध में एक क्रेडिट गारंटी फंड सेटअप किया गया है। इसके साथ साथ 2 योजनाएं थी जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित की थी, एक स्टैंड अप इंडिया, एक स्टार्टअप इंडिया, 15 अगस्त के अपने भाषण में। जो स्टार्टअप इंडिया टेक्नोलॉजी कंपनीज के संबंध में थी, जिसका कि 16 तारीख को लॉन्च है। शायद इसका भी हम उसके साथ आरंभ करने की कोशिश करेंगे। स्टैंड अप इंडिया के तहत केवल एससी और एसटी और महिला एंटरप्रेन्योर, देश का हर बैंक ब्रांच, एक एससी एसटी कैटेगरी में यह न्यूनतम है, मिनिमम है, और एक महिला एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण देकर खड़ा करेगा। इसमें एक और प्रयास भी है, इसका अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है दोनों योजनाओं का, कि मुद्रा की सफलता से ग्राउंड लेवल के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और ये वो श्रेणियां हैं स्टैंड अप इंडिया में जिसमें महिला और एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने की आवश्यकता है, और इसलिए उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देकर अपना एंटरप्राइज ये सेटअप करें, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ये सेटअप करें। ऋण की व्यवस्था जो क्रेडिट गारंटी है किस तरह से होगी, सेक्रेटरी डीएफएस आपको बतला देंगे। एक मिनट, some of your questions I would have answered, perhaps. Now, first, the credit guarantee fund for Mudra loans. For this, we are looking at a corpus of 3,000 crore. This is as per the budget speech of the Honorable Finance Minister for the year 2015-16. The credit guarantee is going to be settled by the National Credit Guarantee Trustee Company, which already is in existence. The credit guarantee is going to be on a portfolio basis, and we expect that the banks will be picking up the credit guarantee fee. As far as the entire Mudra portfolio is concerned, it is not going to be passed on to the borrowers. If there are any specific questions, I will tell you more about it. But basically, the rate of refinance is 1%, and it varies
according to the risk which is perceived for banks, for RRBs, for cooperative banks, as well as for NBFC, MFIs. As far as the Startup India Credit Guarantee Fund is concerned, this is also going to be settled by the same National Credit Guarantee Trustee Company Limited, which is already in existence. This is going to be the operating agency as well. This is a corpus of rupees 5,000 crore, and the amount that is going to be guaranteed is going to be 75% of the loans. This is going to be on an individual guarantee basis, not on a portfolio guarantee. And this 3,000 crore comes at one go? We keep putting money in as and when we need it. Initially, it's already been started with about, I think, 250 perhaps. We still have to take a call on that, but the money is going to be available as and when it's needed. The entire amount of the Mudra borrowing. सर ये स्टैंडअप योजना का जो लोन लिया जाएगा क्या वो मुद्रा लोन से डिफरेंट होगा? ये जो लीस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इसमें हम वल्नरेबल सेक्शंस को टच कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि महिला और SC ST आए, तो बैंक का जो लीस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इनके ऊपर शायद लागू होगा. That is correct, sir. ये मुद्रा से अलग होगा सर? ये मुद्रा से अलग है. और विदाउट कोलेटरल? नहीं, मुद्रा का जो है आपका लोन, जैसे अभी एडम साहब ने बताया था, 10 लाख तक है. 10 लाख तक है. ये शुरू ही 10 लाख से ये होता 10 है. से ऊपर होता है. और पर आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि जो मुद्रा के बेनिफिशरीज है कई माइग्रेट करके अपस्केल करके जब अपनी बिजनेस को करेंगे तो ये जो महिला या SC ST मुद्रा में है और अपस्केल करना चाहते हैं, ये सुविधा उनके लिए उपलब्ध होगी. कोलैटरल 10 लाख तक फ्री है लोन. Sir, you mentioned that each bank will give a minimum to one SC and ST and police. Does it apply to private banks also? Yes, So each private bank branch will also. all the branches. Actually, the number, because these branches keep opening almost by the day, so the number of branches is also quite significant now. 1,85,000. Huh? 1,85,000. How many? What are the One? total number of branches? 1,85,000 branches. 1 lakh? नहीं अभी तो वी हैव बेस्ड आवर कैलकुलेशंस ऑन 1,25,000 branches. So we are looking at beneficiaries of 2.5 lakh beneficiaries at the end of about 3 years or so. And how many have actually? The scheme has been approved today, the credit guarantee part of it. So that is how it's ये स्टैंड अप तो अभी शुरू होनी है, मुद्रा तो चल रही है. मुद्रा लोन जो काफी बड़ा है और क्रेडिट गारंटी फंड उसकी बहुत 3,000 करोड़ है, जबकि स्टार्टअप. Two things. I anticipated this question. A, the Mudra loans are smaller, and the stand-up India loans are going to be much bigger. So therefore, you need. देखिए, larger. मुद्रा लोन क्योंकि छोटा है, इसलिए इस पे मान लीजिए कोई हेयर कटिंग सलून चलाता है तो वो तो 10 लाख नहीं लेगा, उसका तो 50,000 1 लाख में काम चलता है. तो जितना मिनिमम उसको चाहिए, क्योंकि ये कार्ड के ऊपर ऑपरेट करता है, तो रोज जाकर ATM से उतना पैसा निकालता है जितना उसको उस दिन चाहिए. कोई वेजिटेबल वेंडर है तो वो आरंभ में ही 5 लाख रुपया लेके रख ले और उस पर ब्याज दे, उसका कोई उद्देश्य नहीं. उसको उस दिन के लिए जितना ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए वो लेता है और उसको तुरंत जाके वापस डालता है ताकि उस पर ब्याज का बोझ ना पड़े. That is true. On the Mudra scheme, I'll just add. One crore. On the Mudra scheme, interest is calculated on a daily basis. So the smaller the balance, the lower the interest. I'm sorry, आप कह रहे थे? 1 करोड़ का अपर लिमिट. ब्याज है जो सर आप करें जो सबसे कम होगा वो लागू होता है. हर बैंक के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगा, फिर केंद्र सरकार कुछ तय कर देगी. ये बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है ये डीरेगुलेट बहुत साल पहले का हुआ है. इस केस में इस केस में ऐसा है कि जब किसी को रीफाइनेंस और क्रेडिट गारंटी चाहिए होता है तो वो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं. तो उस कैटेगरी के अंदर जो भी लोन मैक्सिमम तय होता है उसके विद इन रहते हैं इफ़ दे वांट. Well, you're watching the live telecast from North Block. Finance Minister Arun Jaitley there addressing the press on the issue of the first credit guarantee scheme for Mudra loans. Well, that brings us to the end of this edition of the news. But news and updates continue on DD News. Stay tuned. Namaskar.